Good afternoon class. Today we are going to discuss about electronic configuration of elements and the periodic table. Students, earlier also we have seen that what is electronic configuration. Students, पहले भी हमने देखा कि electronic configuration क्या है. So electronic configuration is basically the distribution of electrons into various orbital. ये क्या है? हम इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वेरियस ऑर्बिटल्स में ऑफ एन एटम, ओके, is called electronic configuration. Students, earlier we have seen only the definition of electronic configuration of element and also we have seen that how these electrons are filled in the orbital. हमने ये भी देखा कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स की हम फिलिंग करते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स में डिपेंडिंग अपॉन देयर वर 3 प्रिंसिपल्स. कुछ प्रिंसिपल्स थे लाइक अबव प्रिंसिपल which is building a principle, then we have seen the Hund's rule and after that we have seen the Pauli exclusion principle. So in the 3 principles के बेस पे हम electrons की filling करते हैं. Now students, in this section we will discuss that there is a direct relationship between the electronic configuration of an element and its location in the periodic table. Students, इस section में हम देखेंगे कि जो electronic configuration है एटम्स का या एलिमेंट्स का, उसकी एक डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलेगी विद द लोकेशन इन द पीरियोडिक टेबल, कि वो एलिमेंट कहाँ लोकेट हो रहा है पीरियोडिक टेबल में. सो स्टूडेंट्स, लेट अस बिगिन टू आवर टॉपिक दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियड. सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीरियड्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे होती है. स्टूडेंट्स, अर्लियर आई हैव टोल्ड यू दैट इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, अगर हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात करें, सो देयर आर बेसिकली 18 ग्रुप्स. यहाँ पे 18 ग्रुप्स पाए जाते हैं एंड देयर आर 7 पीरियड्स. सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट दीज 7 पीरियड्स. आज हम लोग इन 7 पीरियड्स की बात करेंगे कि इनमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का क्या पैटर्न होता है या कितने एलिमेंट्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं. सो स्टूडेंट्स, ईच पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल इंडिकेट्स वैल्यू ऑफ एन. हमने जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा था ये उसी वैल्यू को डिटरमाइन करता है, ओके, फॉर द outermost और द वैलेंस सेल. सो स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट पीरियड, अगर हम सबसे पहले पीरियड की बात करें, सो इट करस्पॉन्ड्स टू द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एनर्जी सेल. इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो फर्स्ट एनर्जी शेल में होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, के शेल, ओके. एंड स्टूडेंट्स, here basically n will be equal to 1 because this is first period. Since this energy shell has only one orbital, चूँकि ये एनर्जी सेल में क्या होता है, केवल एक ऑर्बिटल होता है, एंड फॉर दिस इट कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन. देयरफॉर फर्स्ट पीरियड हैज़ ओनली 2 एलिमेंट. इस वजह से जो फर्स्ट पीरियड होता है उसमें हमें केवल 2 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, and these are basically hydrogen which is having electronic configuration 1s1 and helium which is having electronic configuration 1s2. okay students, suppose you are observing a periodic table. आप एक periodic table देख रहे हैं, तो यहाँ पे first period में यहाँ hydrogen है and at this corner, at the very corner of noble gases there is helium. okay, now students, let's see about द सेकेंड पीरियड. अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें, इट करस्पॉन्ड टू द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड एनर्जी सेल. इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है सेकेंड एनर्जी सेल में, दैट इज़ एल शेल. कौन सी शेल, एल सेल, वेयर वी कैन से दैट एन इज़ इक्वल टू 2. यहाँ पे एन क्या होता है, 2 होता है. सिंस दिस शेल हैज़ 4 ऑर्बिटल, इस सेल में 4 ऑर्बिटल्स होते हैं. 1 ऑर्बिटल इज़ ऑफ 2s, एक ऑर्बिटल जो होता है वो 2s का होता है, एंड 3 ऑर्बिटल्स ऑफ 2p. ओके, 2s और 2p के ऑर्बिटल्स होते हैं. सो स्टूडेंट्स, द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विच कैन बी फिल्ड इन दिस ऑर्बिटल्स आर 8. 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 2s एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स इन 2p. सो देयरफॉर फ्रॉम हियर वी कैन से दैट इट अकोमोडेट 8 एलिमेंट्स. ओके, एंड स्टूडेंट्स, दीज एलिमेंट आर बेसिकली lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon, and you can see their electronic configuration. Helium represents the 2 electron and 2s1, so basically lithium is having atomic number 3, then beryllium is having atomic number 4, so helium correspond to 2 electron and 2s2
represent the 2 more electrons. So in this manner you have to give their electronic configuration. Now let's talk about the third period. Students, it basically corresponds to the filling of electron in the third shell, that is n is equal to 3, which is also m shell. And students, this shell has 9 orbitals. This cell basically has 9 orbitals, 1 of 3s, 3 of 3p and 5 of 3d. But students, there is an exception, or there is a consecution. What is that? Let us see. We know from energy level diagram for multi-electron atom that 3d orbital have been higher energy than 4s orbital. जब हमने मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के बारे में देखा तो हमने देखा था कि जो 3d ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी हायर होती है एज़ कंपेरिजन टू 4s ऑर्बिटल. सो स्टूडेंट्स, अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें तो इसमें जो फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन की वो इस मैनर में होगी कि पहले हम फिलिंग करेंगे 3s को, उसके बाद फिलिंग करेंगे 3p की. ओके, 3d की फिलिंग नहीं होती है. दैट्स वाई हियर 8 एलिमेंट्स आर ऑकरिंग. ओके, and these elements are basically sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon. And you can see their electronic configuration. आप इनका configuration देख सकते हैं. Neon, the inner core represents 10 electron and 3s1, that is 11. So sodium has electronic configuration, atomic number 11. Then we can see magnesium. So helium, neon represents the inner core, that is 10 electron and 3s2. Adding this, it becomes 12, which is the atomic number of magnesium. So in this manner we are going to give the electronic configuration of third period of element. Students, now talking about the fourth period. अगर हम fourth period की बात करें so it correspond to filling of electron in the fourth energy level. इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है फोर्थ एनर्जी लेवल में. And students, it starts with potassium, that is having atomic number 19, and the electron goes in the manner that 4s1, which correspond to potassium, then 4s2, which correspond to calcium. But students, after filling of 4s orbital, the filling of 3d orbital begins. जब हम 4s orbital की filling कर लेंगे because इसकी एनर्जी लोअर है एज कंपेरिजन टू 3d, फिर हम 3d ऑर्बिटल्स की फिलिंग करेंगे. And we all know that d orbitals correspond 10 electrons. Okay, d orbital corresponds to 10 electron. You can see here. So basically 2 for s and 10 element for d, and after that 4p orbital came, which is having 6 electron. That means 6 element. So overall in fourth period there will be 18 elements. Okay, and these elements are potassium, calcium, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc, gallium, germanium, arsenic, selenium, bromine and krypton. And talking about their electronic configuration, so you can see that potassium is having the electronic configuration argon, which is inner core, which represents 18 electron, then 4s1. So totally potassium is having 19 electron. Then talking about calcium, so argon 4s2, argon represents 18 electron and 4s2, that means 20. After this 3d orbital filling will be taking place. Okay, and after the filling of 3d10, the 4p orbital filling will be start. So this is all about today's lecture. In our next lecture we will discuss about the filling of 5th, 6th and 7th period. Thank you class.